The answer are already given in This the, call is now being recorded. third question के तो वो given होते हैं ना आपको answers already. Or similarly, question number 4 is slightly different than all because उसमें आपको you have to plan and investigate your working and stuff. So let's start with question number 1, everyone. And all right. So silver chloride is an ionic compound insoluble in water. Is an ionic compound. We know that most of the ionic compound, they are soluble in water. But silver chloride, we know silver halides, whether it is silver chloride और सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाइट पीपीटी बनाता है. सिल्वर ब्रोमाइड क्या बनाता है? क्रीम. एंड सिल्वर आयोडाइड क्या बनाता है? येलो. So these are the precipitate that are part of our syllabus. Silver halides are insoluble. Molten silver chlorides breaks down during electrolysis. Electrolysis is a process in which molten or aqueous substance is ionized using electricity. Products are chlorine and silver. Okay. Now, chlorine is insoluble in water and is a toxic gas. Chlorine का लिख लो भाई. Chlorine अगर वो पूछ ले किसी reaction में chlorine produce हो रही है, what are the precautions? तो and why? तो आप लिखेंगे there should be fume cupboard. Why? Because chlorine is toxic. अगर आप इस रूम ऐसे एक laboratory में नहीं हो जहाँ पे कोई ventilation नहीं है, तो there can be serious problem because it is toxic. It is literally toxic. Poisonous gas होती है. अगर आप एक proper ऐसी जगह पे नहीं हो जहाँ पे ventilation है या fume cupboard है जहाँ पे ventilation एक नहीं है, तो there is a problem because it's a toxic gas. A student suggests that apparatus should break down silver. This apparatus should break down silver chloride. So this is the power supply. We know the anode, cathode, and silver chloride molten. And when it is decomposed, it produces chlorine gas, of course. यहाँ से कौन सी gas निकल रही है? The chlorine gas. So we cannot allow the chlorine to escape like an open air. We have to collect it. Draw an arrow on the diagram to show where the heat must be supplied. तो देखो heat मैंने किसको कर रहे हैं? हम किसको Silver heat? chloride. Yes, तो हम इसको कहाँ पे लगाएंगे arrow? यहाँ पे लिख देंगे heat. लिख भी दो या नहीं भी लिखो, बस put an arrow at the bottom of the test tube to show that at this point it is being heated. Okay, complete the diagram to show how chlorine gas can be collected. So I want everyone to get these 2 marks. Complete the diagram to show how the chlorine gas is collected here. How the chlorine gas is collected? Please complete the diagram for 2 marks. Everyone, please. Done. तो देखो हमने गैस कलेक्ट करनी है, तो देयर इज ओनली वन apparatus in our syllabus that we use to collect the dry gas. I mean a gas. तो इसमें हमने क्या लगाऊंगा, हम इसके आगे क्या अटैच करेंगे? Gas syringe. Gas syringe, right? So just attach the plunger as well, the movable part, and that is what you're going to attach. इसको label भी कर दो. Complete the diagram, labeled any apparatus you have drawn. तो उसने कहा आपने label भी करना है. तो क्या नाम है इसका भाई? What is the name of this apparatus? Graduated gas syringe. Gas syringe. All right. Give 2 observations that are made when the silver chloride breaks down. So when the silver chloride breaks down, let me write the equation first. This is silver chloride. When it breaks down, it produces silver and chlorine gas. Silver chloride तो solid था, तो पहले क्या होगा? पहली observation क्या होगी? Solid dissolves. No, इसमें किसी चीज में dissolve नहीं कर रहे हैं हम. एक liquid आपके पास, liquid substance, जो molten liquid होगा. अब देखो जो when they decomposes, we know that the metal attaches. Metal कहाँ पे जाती है? Cathode पे. ये cathode पे deposits होंगे. तो you will see the deposits at cathode and they will be chlorine का gas का color क्या होता है? Yellow. Yellow gas. So you will see a yellow gas. You can do mention yellow gas at anode and deposits at one of the electrode, which is cathode. ये simple लिख दो, yellow gas and deposits of a shiny metal. Silver is a shiny metal.
shiny metal. Silver is a shiny metal. So yellow gas and deposits of the shiny metal. Part D, E, and F. Read the statements, everyone. And सब लोग आंसर कर रहे हैं. Ahmed Khan and everyone. Part D, E, and F. Safety and reason why zinc is not suitable material to use as electrode, and the chlorine gas was bubbled. Color of the solution changes from orange colorless to orange. Identify the sodium salt and explain what happened to the causes of color change. A very important 5 marks. Done. So if you read the statement of each question and use your knowledge, which is very much knowledge these days, the brain is saturated with chemistry, physics, maths, and different subjects. The person doing experiment followed all normal laboratory safety rules. They're following all safety rules, wearing goggles, lab coat, the gloves. Whenever you're using any corrosive material, any corrosive, just use the gloves which are resistant to corrosion. And whenever there is any toxic gas, that use that goggles. Anything that can splash, just use the what is called lab coat, proper lab coat. And since we are having a gas which is toxic, as I mentioned, chlorine is a toxic gas. So the other than the normal laboratory safety rules, you must have a fume cupboard. So safety precaution: perform the experiment near the fume cupboard. Perform the experiment near or inside? नहीं, उसके अंदर बैठ के तो नहीं करना, जिस तरह किचन के अंदर वो एक होता है आपका उनका बॉडी होता है, उसके अंदर बैठ कर नहीं खाना बनाते, उसके पास बनाते हैं, सो दैट वो जो हाई टेम्परेचर की गैसेस होती हैं वो जल्दी से एस्केप कर देते हैं. सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट near the fume cupboard, right? Reason: chlorine produced is toxic. Now suggest why zinc is not a suitable material. Now It imagine, reacts. yes, we are using silver chloride. And if you recall the reactivity series, zinc is more reactive. It can displace the silver. So it can react with silver chloride, and it can form zinc chloride instead. And silver will be displaced. So it can react. आपके simply क्या लिखेंगे? It can react with electrolyte. Get used up. Yeah, it can react with electrolyte because it won't give the result which we want. It can react with the electrolyte. I have another screen, तो मैं देख रहा हूँ कौन-कौन क्या कर रहा है, पीछे मैं देख लूँ कौन-कौन क्लास में. Dr. Shamin is here. ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है. All right. Chlorine gas was bubbled to aqueous solution of sodium salt. The color of the solution colorless to orange. देखो halogens में और in fact हमारे syllabus में there is only one thing that changes from orange to colorless or colorless to orange. What is that? Methyl orange. अस्तगफिरुल्लाह. वो मिथाइल ऑरेंज क्या होता था? ऑरेंज टू ग्रीन, Orange to green कैसे? कलरलेस टू ऑरेंज क्या चीज है? चेक करना उसके बाद में कलर मिथाइल ऑरेंज का. ऑरेंज हैज नथिंग. Bromine water. यस, ब्रोमीन. सो वो कह रहा है क्लोरीन गैस is bubbled through a sodium salt. Imagine we are not sure what sodium salt is, and chlorine just kick that anion, वो बन जाएगा ये, and you will get NaCl. Now वो जो चीज बनेगी
that will cause the solution to turn orange. तो वो क्या होनी चाहिए, वो चीज क्या होनी चाहिए? Bromine. ब्रोमाइड. तो सॉल्ट का नाम क्या होगा फिर? इनफैक्ट द सॉल्ट वाज सोडियम ब्रोमाइड. तो सॉल्ट क्या है? NaBr. So bromine is less reactive than chlorine, so it gets displaced. So we know that chlorine is more reactive than bromine, so displacement would happen and you will get Br2, and Br2 is what is orange, not bromide ion. Sense, everyone? So please check Yes, sir. D, E, and F. Everyone, please read these questions. Read these questions again and look how we structure the answers. You should be very clear with your logic in every single part. सर मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ओरिजिनल कलर नहीं होता, हमेशा कलर डिपेंड करता है, सिंस इट इज इंडिकेटर ना, तो इट डिपेंड्स कि किस सॉल्यूशन में है. इफ इट इज एन एसिडिक तो ऑरेंज होगा. नो, इफ इट इज एन एसिडिक, वेट, ऑरेंज टू ये होता है येलो टू ग्रीन. ऑरेंज टू ग्रीन कंफ्यूज कर दिया मैं. आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट भेज दूंगा, उसमें चेक कर लेना. किसी को याद है मिथाइल ऑरेंज का कलर? सर हमें तो ऑरेंज टू येलो पता है. येलो एट एंड पॉइंट एंड ऑरेंज टू ग्रीन होता है डाइक्रोमेट. ये होता है रेड टू येलो, रेड इन एसिड, येलो एट द एंड पॉइंट. I'll provide you with the list of indicators, don't worry. कर लिया चेक सबने? Okay, so here is this your favorite question, everyone. Question number 2, which is generally question lengthy होता है, वो आपकी पूरी इंग्लिश की रीडिंग का स्टेमिना टेस्ट करता है, but at the end of the question it is a high scoring question, and not only it is high scoring, but it is of course easy है तो high scoring है. The only thing we need to show patience and we need to underline each important information given in the statement. A student investigated the rate between aqueous potassium hydroxide and two different solutions of HCl. So now we have HCl, two different solutions. What does it mean? What does it mean, two different solutions? Both have different concentration. It is possible that the one solution have high concentration, more HCl molecule per unit volume compared to the other one. Both are solutions of HCl, but different concentrations. Two experiments were done. Now they reacted with both of these separately with NaOH, which is an alkali, and see that how much alkali is required to neutralize. Imagine I have 25 of NaOH, and the sample 1 of HCl, only 10 cm cube of HCl neutralize the 25 of NaOH. This is our test 1, experiment 1. So 10 centimeter cube of HCl was used to neutralize 25 of NaOH. Now we use the same 25 of NaOH again with second sample of HCl. This time 20 cm cube of HCl was required to neutralize the same amount of NaOH. सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? We have two different samples of HCl and we know the concentration of NaOH. When you reacted 25 cm cube of NaOH with sample 1 of HCl, only 10 cm cube of HCl reacted with 25 of NaOH and get the endpoint. With sample 2 of HCl, in sample 2, it took 20 cm cube of HCl to neutralize the same amount of NaOH. Which HCl is more concentrated? Sample 1 or sample 2? Give the reason. The first one. Okay, let me just write it again. देखो हमारे पास 25 of NaOH है भाई, 25 cm cube of NaOH guys. Sample 1 का जब हमने reaction किया HCl, तो 10 cm cube of HCl provides the same amount of hydrogen ions which are present in 25 cm cube of NaOH. I mean neutral कोई चीज तब होती है ना when the same amount of H and OH becomes equal. So imagine इसके 10 cm cube ने उतने H plus प्रोवाइड किए जितने इसके 25 में हाइड्रोक्साइड आयन थे. It gets neutral, water बन गया. Now to the same volume of NaOH, we are using another sample of HCl.
and this time it was measured that 20 centimeter cube, a more double volume of HCl, was used to produce the same amount of hydrogen ions which were produced by the 10 cm cube of sample 1, which means sample 2 is more dilute. Sample 2 is what? It is more dilute. It is very dilute and less concentrated. So this one is more concentrated. This is the whole summary of this. Let's just see what exactly they are doing here. A burette, which is the most accurate piece of apparatus, is filled with a solution A. Some of the solution A was run out of the burette so that the level of solution A was on the burette scale. So whenever you take something in the burette, before you add something into the conical flask, first you have to run some of the solution out so that you set the scale first. A measuring cylinder was used to measure 25 of aqueous NaOH into the potassium hydroxide. Now there is an error in terms of the procedure in step 2. कोई बताएगा what is the error in step 2? Yes. Step 2 क्या है? Measuring cylinder use करना. Measuring cylinder measures the volume. I mean 25 measure करेगा, but it does not give the exact 25. So instead of वो आपसे पूछ सकता है कि improve the accuracy, you will say in step volumetric pipette. Use pipette instead of measuring cylinder, which will measure exact 25.0. The aqueous potassium hydroxide was poured into the conical flask. 5 drops of methyl orange, which indicator was added. Solution A was added slowly from the burette. And here is the reading, the initial reading and the final reading. Look at the initial reading, guys. What is the initial reading here? क्या reading है initial हमारे पास? What is the exact reading? 8? 8 लिखेंगे इसको? नहीं एक मिनट, इसका अच्छा नहीं, एक मिनट, HCl है, किसका है? क्या लिखेंगे इसको हम? 8.0 because the decimal places are there. So you cannot randomly just say 8, 7 लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा because one decimal place की उसने आपको graduation दी हुई है. I mean on the apparatus it is sensitive up to 0.1. So if it is 8, please mention 8.0. What is the final reading? Final reading क्या? What is it? 18.1. ये यहाँ से ये है जो फाइनल रीडिंग जो एम्प्टी हो गया, ऊपर से आ रही रीडिंग, ऊपर से 17.9. क्या है रीडिंग बेटे? 17.9. So the final reading is 17.9. We can do the maths that how much of So 17.9 minus 8 is how much? 9.9 of HCl sample A was used to reach the end point. ऐसा ही. Now experiment 2 उसने किया. The conical flask was emptied, rinsed with distilled water. Burette was emptied, rinsed with distilled water. There is a problem. You cannot rinse the burette with distilled water. You have to rinse the burette with the same solution you are going to add. अगर आप burette को distilled water से rinse करोगे, तो water droplets will remain inside and they might dilute the solution that you are going to add afterwards. So you have, देखो उसने next step में क्या किया हुआ है? Burette was rinsed with solution B. So they are rinsing it with the same solution that they are going to add it into. Burette was filled with solution B. तो उसी के साथ rinse करना है जिसके साथ इसको जो बाद में add करना है. Some of the solution B was run out to set the burette scale. Measuring cylinder, measure 25, potassium hydroxide. Aqueous sodium hydroxide is added. Methyl orange is added, exact same. And here is the reading again. So क्या reading this time? What is the initial reading? 7.5. 1, 2, 3, 4. Yeah, it is exact 7.5. This is the initial reading. And what is the final reading, guys? 27.3. Yeah, so this has to be 27.3. So क्या आएगा difference? So 27.3 minus 7.5, 19.8. तो कौन सी रॉकेट चीज की है जिसके आपको 4 मार्क्स मिल गए अभी तक? कोई मुश्किल काम नहीं किया. The most easiest thing. State the color change.
तो देखो सबसे पहले हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करें. मिथाइल ऑरेंज ऐड किस, मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर गाइस, and this is the conical flask. Inside the flask we put NaOH या KOH, and at the top, which is burette, we had an acid here. यहाँ पे HCl था. तो इंडिकेटर हम कहाँ ऐड करते हैं? ब्यूरेट में ऐड करते हैं या कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं? Where do we add indicator? Conical flask. We add indicator in the flask. इसका मतलब ये है कि वो जो मीथाइल ऑरेंज था, मीथाइल ऑरेंज, सबसे पहले हमने उसका कलर लिखना है किसमें, और कॉनिकल फ्लास्क में है क्या? व्हाट इज इनसाइड द फ्लास्क? NaOH. Alkali. So इसका मतलब ये है कि we will first write the color in alkali and then in acid, because at end point, even if you add 1 drop of excess of the HCl, the whole solution will become acidic. So alkaline ने बेटा ये जो NaOH होता है, I mean methyl orange, it is yellow in alkaline solution, and as I mentioned, it is orange in acid. So हम लिखेंगे from yellow to orange. Yellow in alkaline and orange. Orange ये होता है end point पे. वैसे ही end point के ऊपर आप एक भी excess drop डालोगे तो ये red हो जाएगा. It will not remain orange even if you add excess of acid. अब वो किससे पूछ रहे हैं? At the end point. Exactly at end point it will turn orange. But अगर आप end point से ज्यादा एक भी drop add करोगे तो it will turn red instead. Right? So yellow to orange. Okay. All right. So before starting the titration in experiment 2, conical flask was rinsed with water. So conical flask को आप water से rinse करो, उसको हम water से ही rinse करते हैं to remove any impurity or residue from the previous experiment. You know why the flask was rinsed with water? To remove any leftover or residue from the previous experiment. To remove any residue left after experiment number 1. तो पिछले एक्सपेरिमेंट का जो भी था वो, the conical flask was not rinsed with the aqueous potassium hydroxide. Conical flask को हम देखो जो ब्यूरेट होता है, it was rinsed with distilled water first to remove any residue, and then it is rinsed with the same solution that you are going to add. अगर आप इसको इस solution से add नहीं करोगे तो some of the water droplet may remain and they may change the concentration of the original acid. You have to wash this conical flask with distilled water, because इसमें अगर इसके वॉल्यूम चेंज भी हो जाए, that does not make any difference, because हम तो इसको मेजर कर रहे हैं ना. We are looking for to get the end point. अगर हमने ये इतना ऐड किया है तो how much HCl is required. अब यहाँ पे कुछ इससे relevant पूछेगा वो. The conical flask was not rinsed with aqueous hydroxide. State how rinsing the conical flask with potassium hydroxide would change the volume of B. देखो अगर बेटा हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंस करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर रह जाएगा. वो हमने तो अपनी तरफ से 25 ऐड किया था ना, बट कुछ ड्रॉपलेट्स उसके अंदर आ जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ 25 और 26 होगा. तब जो एंड पॉइंट आएगा, हमने तो 25 के लिए कैलकुलेट किया है बट एक्चुअली वो तो 26 वाला होगा क्योंकि नीचे तो वॉल्यूम ज्यादा है. तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेजर द एग्जैक्ट एंड पॉइंट. तो जो ऊपर से आप टाइटर ऐड कर रहे हो वो आपको ज्यादा ऐड करना पड़ेगा. राइट? मेक सेंस एवरीवन? सो state how rinsing the flask would change the volume of solution B needed. तो जो B ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं, imagine this is solution B, तो जो B ऐड कर रहे हैं it will become more, वो ज्यादा हमें ऐड करना पड़ेगा compared to what we were initially adding. So as some drops of aqueous potassium hydroxide will remain inside the flask, so therefore more volume of B is needed to reach the end point. More volume of B will be required. Right?
तो B का ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा टू रीच द एंड पॉइंट. Deduce which of the aqueous solution of A or B was more concentrated. तो ये हमने बात पहले डिस्कस कर ली थी. Now to reach the end point, this much volume of B was required, and with A we need 19 parts. So which is more concentrated, sample A or sample B? Which is more concentrated? Yes. सर सैंपल ए में कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है? इसमें बेटा 9.9 of acid was required to reach the end point, which is 25.0 of NaOH को अगर हमने न्यूट्रल करना है तो सैंपल ए का 9.9 यूज हुआ, और टू द सेम वॉल्यूम ऑफ NaOH सैंपल बी का कितना यूज हुआ? 19.8. इसका मतलब तो सॉल्यूशन ए जो जिसमें कम यूज हुआ है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, क्योंकि इतने कम वॉल्यूम ने 25 को न्यूट्रल कर दिया कंपेयर टू द अदर वन, राइट? सो reduce which is more concentrated, explain your answer. So sample A is more concentrated as less volume used. As less volume was used to reach the end point. As lesser volume of A was used to reach the end point compared to B. जिसमें ज्यादा वॉल्यूम यूज हुआ है. How many times it is more concentrated? तो हम इसकी सिंपल रेशियो दिखा लेते हैं. इसमें 19.8 है और उसमें क्या है? 9.9. तो रेशियो कैसे पता फाइंड करेंगे बेटा? सबसे छोटे से डिवाइड कर दो तो 2 पॉइंट समथिंग लगेगा. सो 19.9 over 9.9 एग्जैक्टली 2.01 आ रहा है और इसका 1 आएगा. तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? 2 times. Twice, right? So sample A is twice more concentrated than B, right? यही क्वेश्चन आप rather than solving another paper, यही क्वेश्चन तुम लोग यही पेपर खुद से सॉल्व करोगे दोबारा से to get a better understanding of about ATP के how the thing works and how the examiner tests your understanding. Explain why experiment 1 and experiment 2 should be repeated. So why do we repeat the experiment? To identify anomaly. To identify the anomaly or to get the more reliable results. Whenever you are being asked to get, increase the accuracy, तो हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, हम एक ही बार रीडिंग नहीं ले सकते because we never know कि फर्स्ट टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने कोई रीडिंग मिसकैलकुलेट कर लिया हो, इंडिकेटर ज्यादा ऐड कर दिया हो, वॉल्यूम. सो एटलीस्ट आप तब तक आपने 3 टाइम रिपीट करना है so that you get the similar result. So to increase they should be repeated to increase the accuracy or to get the reliable results. सर इसमें अनोमली मेंशन कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई अनोमलस है, फॉर एग्जांपल अगर पहले ही आपका अनोमलस आ गया, वॉल्यूम 20 आना था वो 25 आ गया, तो आप जब तक रिपीट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा अनोमलस आई है या नहीं, so to increase the reliability, the accuracy of the experiment, or to remove any anomalous point, deduce which solution B, use a volume of solution B required if experiment 2 was carried out with 50 cm3. अब अगर हम experiment B को डबल कर दिया हमने, पहले बेटा हमारे पास experiment B में कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है? 19.8 of B was used to neutralize 19.8. देखो HCl का 19.8 हम यूज कर रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? वो तो 25 ही लिया था. वो कह रहे 25 के बजाय इसको डबल कर रहे हैं, इसको भी तो डबल करना पड़ेगा ना फिर, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बस, राइट? कितना होगा? It would be exactly double. 19.8 times 2 would be anything 39.6. हाँ, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है. Describe one change that could made to the apparatus to improve. देखो पूछ लिया ना उसने, क्या चेंज करेंगे? Don't use measuring cylinder and use pipette. क्या यूज करना है हमने? Pipette. Describe what effect using a larger conical fan. नीचे आप देखो ना, आप नीचे फ्लास्क ली हुई है 25 वाली, उसकी बजाय आप 100 वाली भी ले लो, सोल्यूशन उसमें 25 डालो तो ऊपर से सोल्यूशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जितना सोल्यूशन देखो ना, आप को भूख लगी हुई, फॉर एग्जांपल यू वांट टू हैव 1 plate of biryani,
तो आप उसको छोटी प्लेट में डालो, आपने उतनी चाय, आप उसको बड़ी प्लेट में डालो, आपने तो एक प्लेट खानी है. सो द वॉल्यूम ऑफ द एसिड required to neutralize that same amount of volume of NaOH and KOH would remain same. आप छोटी फ्लास्क लो या बड़ी लो, उससे वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना. सो वी विल से देयर इज नो इफेक्ट एज आप बड़ी फ्लास्क यूज कर लो या छोटी फ्लास्क यूज कर लो. सर लेस एक्यूरेट नहीं होगा ये? क्यों लेस, क्यों एक्यूरेट होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्यूरेसी? I mean, describe the effect of using larger conical flask में तो हमने कोई चीज ऐड ही नहीं की. It is not even used to measure the volume. हमने तो पाइपेट से यूज किया था, conical flask में डाल दिया था. अब पाइपेट से measure करके डाल रहे हैं, बड़ी फ्लास्क में डालो या छोटी में डालो, है तो 25 पॉइंट हुई, राइट? ओके. अगर आप ऊपर से ब्यूरेट की जगह कुछ और ले रहे हैं तो फिर एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी, बिकॉज ब्यूरेट इज द मोस्ट एक्यूरेट. यू गेट एन एक्यूरेट आइडिया. सो ये पेपर आपने कल की क्लास से पहले राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 4 आपने कंप्लीट करना है. इंशाल्लाह कल भी हम और डे आफ्टर टुमारो भी हम एटीपी करें. टुमारो विल डू अनदर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, बट यू विल सॉल्व द सेम पेपर क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 द एंटायर थिंग. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.